Ji Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the Venn diagram. Venn diagram is basically derived from the scientist and mathematician which is John Venn. क्या मैं आपको बताने लगी हूँ कि उसको किसने ड्राइव किया था? जॉन वेन. ओके, एंड इन 1885. ठीक है जी. अब हम इसके डिटेल में देखते हैं. तो वेन डायग्राम में बेसिकली एक लिया जाता है यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए होता है और एक सेट कंटेन किया जाता है बी, यानी दो कोई भी सेट लिए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन rectangular form. This is set B. I will draw here three types. Let's suppose this is universal set, this is also universal set, and this is also universal set. Let's suppose if A and B are disjoint, यहां पर हम कर लेते हैं ओवरलैपिंग केस. एंड यहाँ पर किसी एक को दूसरे का सबसेट बना लेते हैं. ठीक है जी. जब हमारे पास इस तरह का केस आता है ए एंड बी को जब हम डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंटेड है, मीन उसका कोई सिंगुलर एलिमेंट भी सेम नहीं है. इसको मैं थोड़ा सा साइड पे अगर लिखती हूँ कि ए सेट है, लेट्स सपोज मैंने उसको लिखा है 1 2, और बी सेट मैंने लिख दिया है कि वो कौन सा सेट है, वो 3 और 4 सेट है. ठीक है जी, 3 एंड 4. इस तरह से दो सेट है, उनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, सो दैट मीन दीज आर द डिसजॉइंट सेट. बट इफ देयर इज मेंशन, let's suppose there is mention a set 1 2 3 and the second one 3 4, so that mean only here is only 3 number which is repeated in both sets, set A and B, so that means this is the overlapping case. This is the overlapping case. And in the third case, let's suppose for third case, ठीक है. थर्ड केस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रेस करके आपको दोबारा से बताती हूँ कि थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा. सेट ए अगर हम मैं कंटेन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये सेट ए है विच इज इक्वल्स टू 1 and 2, and here is set B which is equals to 1 2 3 4. So that means all elements of set A are also element of set B. So this means A is a subset of B. In first case, when there is a there is a pair of disjoint set U, this is universal set, this is again universal set, and this is the universal set. So let's suppose if A and B are disjoint set, one set will be derived here, written here, and second one will be here. These are the disjoint set. All the elements of set A and B, let's suppose here is 1 2 and this is the 3 4. 1 2 3 4 are also element of set U, यूनिवर्सल सेट. इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. हमारे घर का ये किचन है. ठीक है जी, ब्लू कलर से मैं इसको कर देती हूँ. मैं कहती हूँ ये किचन है और ये ड्राइंग रूम है. किचन और ड्राइंग रूम क्या ये पूरे घर का हिस्सा नहीं होते? So that means all the products with all the elements in the set A and B are also element of set U, universal set. And for overlapping case, here we will draw a pair. Let's suppose 3 element is the repeated in both set A and B. Now all the remaining elements of set A other than 3 will be written here. Let's suppose 1 2, and here is set B which is 3 4. 3 will be written in the middle section and 4 is the remaining part, so that means 4 will be written in the remaining portion of set B. Now A is a subset of B. First of all, here is a set A because A is the smaller, 1 2, and A is the subset of B. This is B and this is A. Now 1 2 is already mentioned. 1 2 is, if 1 2 is the part element of set A, then automatically these are the elements of set B. So all the remaining element which is 3 and 4, 3 and 4 be written outside of set A but inside the set B. 1 2 3 4 combining all these elements are also element of set U. Okay, these are the types of the sets Venn diagrams for disjoint, for overlapping case, and this is the subset case. Keep it in your mind when we will discuss about question. We will take help from these diagrams. The first one case,
This is second one case and this is the third one case. Is it clear? Thank you so much. Allah Hafiz.